Okay, so please take care and use mask and gloves or whatever protection you can have. Okay, Chaitra? Yes, sir. Yeah, sir. Okay, okay. घर पे आने के बाद सैनिटाइजर से नहाना ही पड़ता है. Please don't take bath with the sanitizer. You can take bath with the normal water. ऐसा ही होता है because we have to travel via the public transport, metro, then bus and everything to come and go. We have to You are in take the Kochi, na? transportation. You are in Kochi, na? Yeah, Kochi. Okay, okay. Because Kochi Metro, I guess Sridharan was the MD Yes, there also. E. Sridharan. E. Sridharan, yeah, Delhi Metro ka chief, the former chief of Delhi Metro. Yeah. Okay. Chalo, theek hai. Okay, so please tell me, who can tell me, like using the mic, the reasons for the decline of Guptas? Who can tell me using the mic the reasons for decline of Guptas? मैंने बोला using the mic. Good afternoon, sir. Good afternoon, Avinay. So the decline of Guptas were basically because of three reasons. So strain on resources because the Huns had attacked from the northwest, sir. And with frequent wars, it took a hit on the financial resources of the Gupta dynasty, and because of that, there was quite a strain on resources. Then next, sir, after Skandgupta, there were weak successors who weren't able to handle the large kingdom or the attacks from the Huns. And sir, because of the third reason being the feudal society that had developed, basically the feudalism, where they had given the lands to nobles or governors, which eventually became strong as the Gupta dynasty became weak, and they then declared themselves sovereign and became independent. Okay, बहुत बढ़िया, very good. And Kanchi, unmute please. Yes, sir. Kanchi, can you tell me, like after C2, Chandragupta Vikramaditya, can you tell me the chronology after C2? At least three names, only three names after C2. Okay. After Chandragupta II, there was Kumargupta, Skandgupta, Okay. and I guess P something from P, and after that Buddhagupta. No, P-Gupta, no. Okay. It's something Pushyabhuti, I guess. I don't remember the name actually. Okay, and after that Purugupta? Buddhagupta. Yeah, Purugupta, yeah. पुरुगुप्त, यहाँ तक याद करके ना बस एक लास्ट वाला याद कर लेना, इनको याद करने की कोई जरूरत नहीं है. एंड यू कैन जस्ट रिमेंबर विष्णुगुप्त लास्ट रिकॉग्नाइज्ड रूलर, विष्णुगुप्त. ठीक है, तो लास्ट में बस विष्णुगुप्त. वेरी गुड कांची, बहुत बढ़िया. ओके, सो कल मैंने आपको कुछ और बातें ही बताई थी. आई हैव टोल्ड यू सम बुक्स ऑफ कालिदासा, आई गेस. याद है कालिदासा? रिमेंबर कालिदासा? सो शुभ्रा विल टेल मी any two epics written by Kalidasa. Shubhra. Am I audible, sir? Yes, you are audible, Shubhra. Very much audible. Yes, sir. Sir, so the two epics were Raghu and Kumar Samhar. कुमार रघुवंश एंड कुमार संभवा. आपने ऋतु संहार से नाम आधा ऋतु संहार से नाम ले लिया है. कुमार संहार कर दिया है आपने. इस कुमार संभवा है ना, कुमार संभवा एंड ऋतु संहार, द गार्लैंड ऑफ सीजन, द ऋतु संहार. ओके शुभ्रा, ग्रेट. सबना अनम्यूट प्लीज. Yes, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Sabna, can you tell me the name of two lyrics written by Kalidasa? Meghdooda and Ritu Samhara. Ritu Samhara. What was the story of Meghdooda? About a yaksha, and yaksha was sent somewhere to the earth, Okay, and he missed his wife. Okay, but that means you know. Okay. Mrigank, unmute. Good afternoon, sir. Good afternoon, Mrigank. आप मुझे बताइए name of three plays written by Kalidasa. It is
अभिज्ञानम कुंतलम, माल अग्निमित्र, Okay, Malvika Agnimitra. And देखो गाना याद नहीं आपको? एक गाना था ना, इतना याद नहीं, कितना बढ़िया गाना है, उर्वशी उर्वशी टेक इट इजी उर्वशी, एक गाना था, उससे याद कर लो। इट इज विक्रम और वसिया, विक्रम उर्वशी याद कर लोगे तो भी काम हो जाएगा। उर्वशी वाज द अप्सरा, मैंने बताया था ना, पुरूर आवाज एंड उर्वशी, उर्वशी वाज द अप्सरा। तो यू कैन यूज एनीथिंग जस्ट टू रिमेंबर। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप गाना हो कुछ भी याद करना चाहिए बस। ओके मैदान, ओके मैदान, वेरी गुड। सो आफ्टर Kalidasa, there was one more person, Vishakha Dutt. Vishakha Dutt, already we have seen like 2 books, Mudra Rakshasam and Devi Chandraguptam, and both were dramas. दोनों ड्रामा थे। एक और मैंने आपको बताया था शुद्रक। शुद्रक ने कौन सी बुक लिखी थी सिंधुजा? Professor, it was Mritchakatika. वाओ, मृच्छकटिका। एंड मृच्छकटिका का ओरिजिनल वर्जन किसने लिखा था? भाषा। And what was the name original version? Daridra Charudatta. दरिद्र चारुदत्ता। बहुत बढ़िया। ओके जानवी। Yes. जानवी, मैंने आपको ये बात बताया था क्या? द फर्स्ट ड्रामा टू बी ट्रांसलेटेड इनटू एनी वेस्टर्न लैंग्वेज, कल ये बात बताई मैंने? आई गेस नहीं बताया, ये नहीं बताया। ओके जानवी, क्वेश्चन चेंज। Please tell me, the provinces during the time of Guptas were called as what? The provinces? Huh? I don't remember. सोचो। Provinces, BH, Bhuktis. Okay. I don't remember. I'm so sorry. Okay, no problems. Janvi, who were the like head of Bhuktis? Provincial governors को क्या बोलते थे? I don't know. Uparikas. Uparikas, बहुत बढ़िया, very good Janvi, बहुत बढ़िया। Uparikas, they were called as Uparikas. And Janvi, can you tell me what was Vishti? Vishti was a sort of tax in lieu of forced labor, as in forced labor in lieu of tax was collected from the people. The army used to collect while traveling across the country, so that was Vishti. It was mentioned in Junagadh inscription as well. Very good, बहुत बढ़िया। So basically it was forced labor. Forced labor, yes. Okay, very good Janvi. Damini, please type in the chat box, what was the name of Minister for Foreign Affairs? उस टाइम के एस जयशंकर के पद को क्या बोलते थे? What was the name of Minister of Foreign Affairs? Damini, please type in the chat box. Nagar Shreshthis, seriously? Nagar Shreshthis were the officers, they who were looking after the city administration. Damini, Nagar, देखो नाम में भी आ रहा है Nagar. Nagar means what? Nagar means city. है ना? The Minister for Foreign Affairs were called as, नहीं बताया मैंने कल? I haven't told you this thing yesterday. Okay. Dami, then I'm really sorry. You can please write the name Sandhi Vigraha. 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 Sandhi Vigraha. Okay. So Damini, you can type in the chat box the titles which were used by the Gupta kings. बस titles बता दो, बहुत आसान क्वेश्चन, आसान से पूछा मैंने आपसे titles. What were the titles that were used by the Gupta kings? So Maharaj, only Maharaj. Chakravartin, Samrat, Maharaj.
Maharaja Dhiraj, Parameswara, Param Bhattaraka. Very good all of you. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. Okay. So after that थोड़ी सी बुक्स और हैं, थोड़ी सी बुक्स ये भी कंप्लीट ही कर लेते हैं. एक बुक थी, you must have heard the Panchatantra stories, very famous Panchatantra stories. Have you heard Panchatantra? Panchatantra stories. बड़ी बहुत बढ़िया बुक्स होती थी ना Panchatantra stories. Like sometimes, I don't know about you, but when I was in my school days, so I was in a convent school, and there we were having nuns there. Yeah, you must be knowing that. So convent school में nuns होती हैं, है ना? So when we were having our library period, the sisters, they used to ask us, what do you want to read? So obviously, as student, we used to say we want comics. You know, so they were giving us Archies. But इसमें बिल्कुल मजा नहीं आता था Archies में. So what we used to do is, like Archies, if Archies is here, like Archies में हम छुपा के कोशिश करते थे कि या तो चाचा चौधरी एंड साबू को ले लें, otherwise like पंचतंत्र को ले लें, है ना? Anyhow, if we can manage, है ना, छुपा के, like if sister is coming, we used to call teachers their sisters. So if sister is coming, for उनको दिखेगा कि it is Archies, but behind Archies we were actually reading something else. Basically मेरी दो favorite हुआ करती थी. One was the stories of Panchatantra, and other was that Chacha Chaudhary and Sabu. वो मुझे बहुत पसंद था. मेरे टाइम में बहुत फेमस हुआ करते थे Chacha Chaudhary and Sabu. अभी तो शायद कार्टून भी शुरू हो गया है, टीवी पर भी शायद शुरू हो गया Chacha Chaudhary and Sabu. So Panchatantra की stories, they were also like compiled during Gupta period, and they were written by a person called as Vishnu Sharma. Vishnu Sharma. Panchatantra stories, 84 stories in 84 stories, as far as I remember. There were 84 stories written by Vishnu Sharma. तो एक स्टोरी की एक बुकलेट होती थी मेरी लाइब्रेरी में. आई डोंट नो आपको कैसे देखा कि एक स्टोरी एक बुकलेट, वन बुकलेट समथिंग ऐसे होती थी. बड़ा मजा आता था पढ़ने में. देन अमर सिम्हा ने क्या लिखा? अमर सिम्हा ने लिखा अमर कोश. And what is this Amar Kosh? Amar Kosh is lexicon. What is lexicon? Lexicon क्या होता है? Lexicon is like a dictionary. Yes, it's a dictionary. So Amar Simha ने लिखा Amar Kosh. Okay. Then अच्छा, मैंने अभी जो बताया था, बोला था मैंने, the first Indian drama to be translated to any Western language was Abhigyan Shakuntalam. It was translated into English by William Jones. In the year 1789. ये बताया था कल मैंने. Yesterday have I told you this thing? I seriously don't remember this. तो मेरी short term memory loss की tablet रह गई शायद. Not yesterday. अच्छा, पहले बताया था. Okay. And the first Sanskrit book to be translated into English. The first Sanskrit book to be translated into English. Yes. ये भी तो, अगर ये बताया तो फिर मैंने वही बताया होगा. First Sanskrit book to be translated into English. Mudra Rakshasam. No, Mudra Rakshasam तो नहीं था. एक बार चेक करना पे नोट्स में. I guess feeling a little bit of confused, but I guess it must be Bhagavad Gita. और मुझे याद आ रहा है, this book was translated in the year 1784. Okay, so you can just check the notes, like wherever you have written what I have told you. So Panchatantra stories हो गई. अमर सिम्हा ने अमर कोश लिखा, and also Mahabharat and Ramayan were given final touches
and they were written in the present form. जो रामायण और महाभारत हम आज देखते हैं, those like the epics of Mahabharata and Ramayana, they were written in the present form during this period. In India, there are more than 300 Ramayans that have been written. Do you know this thing? In India, more than 300 different Ramayans have been written. You know this thing or not? है ना, बहुत सारी हैं, एंड सब में अलग अलग स्टोरीज हैं, सब में अलग अलग स्टोरीज हैं. एक रामायण में तो स्टोरी है, सीता वॉज डॉटर ऑफ रावण. सीता वॉज डॉटर ऑफ रावण एंड राम मैरिड सीता. Ram married Sita, therefore Ram had to fight with Ravan. Okay, so this is a story in one of the Ramayana. Okay, so basically इतना variety है हमारे पास में, इतनी variety है. तो रामायण से ही we are having that slogan जय श्री राम, है ना, जय श्री राम. So मैंने आपको पहले ही बताया था basically. So, sir, there might be a possibility that the Ramayana we read today might be incorrect. Abhinay, it is like कि आप किसकी लिखी हुई रामायण पढ़ रहे हो बस. Who has written that Ramayana that you are reading? Very simple. Okay, अभिनय, वो किसने लिखी थी? अब किसी के कहीं हमारे पास ये नहीं पता ना कि इसकी लिखी हुई रामायण सही है क्या, ये लिखी हुई रामायण सही है. There are so many Ramayana that have been written by so many people. Okay, अभिनय, ठीक है. तो नाउ इस बुक्स के बाद में देखो, वैसे तो बुक्स खत्म हो गई हैं, है ना, वैसे तो बुक लिटरेचर खत्म हो गया है, बट बुक्स खत्म नहीं हुई हैं. व्हाई? बिकॉज मैं भी आपको बताऊंगा, लाइक इन द फील्ड ऑफ साइंस आल्सो, इन द फील्ड ऑफ साइंस इट वाज अ गोल्डन पीरियड. इट वाज अ गोल्डन पीरियड. फील्ड्स लाइक मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, मेडिसिन, इनमें बहुत कुछ काम किया गया, ठीक है. मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, मेडिसिन, इसमें अच्छा खासा इनमें लाइक काम किया गया. one very famous person was आर्यभट्ट. आई होप सबने नाम सुना होगा आर्यभट्ट का. आर्यभट्ट. So Aryabhatta was a mathematician and astronomer. He was a mathematician and astronomer. ठीक है, mathematician and astronomer. And he wrote, आर्यभट्ट भाई कुछ तो किताब लिखेंगे ना, ऐसे कैसे वो बिगर किताब लिखे कैसे काम चलेगा. So he need to write something. So he wrote आर्यभट्टिया. देखो कितना अच्छा नाम रखा किताब का. You cannot like forget it. आर्यभट्टिया किताब का नाम कितना प्यारा है. आर्यभट्टिया एक किताब लिखी और लगभग ये किताब लिखी गई थी 499 AD में. 499 AD. गोल्डन पीरियड अभी एंड होने जब like toward the last phase. ठीक है. So आर्यभट्टिया. This book deals in mathematics and astronomy. Aryabhatta deals with mathematics and astronomy. Also, this book explains scientifically the occurrence of solar and lunar eclipse. I hope आप सबको पता होगा what are solar and lunar eclipse. सबको पता है what are solar and lunar eclipse? सबको पता है positions कौन बीच में कौन साइड में. I hope सबको पता होगा. ज्योग्राफी में ये तो कर ही लिया होगा स्टार्टिंग में. Shubhra, I just checked notes. You told Manu Smriti was translated by William Jones in 1770. So Shubhra, is it like there you have written Manu Smriti was the first book to be translated? ऐसा तो नहीं लिखा ना Shubhra? I hope ये नहीं लिखा होगा ना. हाँ ठीक है. फिर that's okay. फिर तो सही है. So solar eclipse and lunar eclipse. This man Aryabhatta, he was the first to declare that Earth was spherical. अभी देख लो आप लाइक इंडियंस किस टाइम में 500 AD भी नहीं आया है और हमने बता दिया अर्थ वाज स्फेरिकल. आई होप कि आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाए गए होंगे, बताए गए होंगे
like to show that Earth is spherical. How we proved that Earth is spherical, है ना? ये आपको शायद कराया होगा ना मेरे ख्याल से. ये अमित सर is teaching you geography ना? हाँ, तो उन्होंने पक्का कराया होगा. I know that. So Earth was spherical. ये किसने बताया? आर्यभट्ट ने बताया. He was the first to declare that the Earth was spherical. और एक और बात बोली, that Earth rotates on its axis. It rotates on its axis. अपनी axis पर rotate कर रहा है. Okay. और क्या बताया कि Earth is spherical and it rotates on its axis. ठीक है? Okay. जो कुछ लोग थे contemporaries of Aryabhat, they rejected what Aryabhat is saying. है ना? We don't require it, but है ना? दोस्तों ने रिजेक्ट कर दिया. वराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर एंड ब्रह्मगुप्त, they were the other people, है ना? other people, इन्होंने बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, आर्यभट्ट साहब आप गलत बोल रहे हो, है ना? आर्यभट्ट के बाद the other person was वराहमिहिर ने like he was an, you can say, authority on astrology. He was an authority in astrology. तो वराहमिहिर ने कुछ बुक्स लिखी. One was बृहद संहिता. तो इतनी बुक्स अभी तक एंशिएंट में एक साथ कभी नहीं आई थी ना. So many books at one go in one period. Are you realizing this thing? Are you observing this thing? So many books in one go, है ना? अभी तक एंशिएंट में नहीं आई थी. This is the first time. So many books. अभी ने सिंह, that's why golden period. So that means जब बुक्स ज्यादा लिखी जाएंगी तो हम गोल्डन पीरियड बोलेंगे. तो चलो सब बुक्स लिखते हैं फिर. We'll bring back the golden period अभी ने. So बृहद संहिता, a book written in Sanskrit. It deals with astronomy, astrology, geography, weather, and architecture, etc. ना काफी सारी चीजें इसके अंदर लिखी हुई है. मैंने बोला एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, वेदर, ज्योग्राफी, आर्किटेक्चर, etc. Okay. The study of weather is called as what? The study of weather is called as what? Yes, anyone? The study of weather. Climatology. Shubhra ने बताया climatology. Shubhra, the study of climate is called as what? Yes, Shubhra, unmute. Yes, sir. ये शुभ्रा, फिर स्टडी ऑफ क्लाइमेट को क्या बोलते हैं? Astrology only. हाँ, Maybe climatology only. क्लाइमेटोलॉजी. तो फिर स्टडी ऑफ वेदर को भी क्लाइमेटोलॉजी स्टडी ऑफ, Because like climate is the weather condition of a particular region only. So ओके. सो जानवी और चैत्रा ने बता दिया. इट इज कॉल्ड एज मेट्रियोलॉजी. द स्टडी ऑफ वेदर इज कॉल्ड एज मेट्रियोलॉजी. हाँ जानवी, बिल्कुल सही पहचाना आपने. IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट. बिल्कुल सही, एकदम सही पहुंचे हो. सो वराहमिहिर की हम बात कर रहे थे. तो ही हैज रिटन वन बुक कॉल्ड एज बृहद संहिता, and it deals with astronomy, astrology, geography, weather, etc. The second book written by this man is called as Brihad Jatak. So Brihad Jatak is a like the work only on astrology. ये purely and purely astrology के ऊपर एक book लिखी हुई है. Astrology, Brihad Jatak. There is one more book written by this man. The book was Pancha Siddhantika. So Pancha Siddhantika, क्या लग रहा है इसका मतलब क्या होगा? What is the meaning of
this word Pancha Siddhantika? Pancha means 5 and Siddhant means philosophy, principles, 5 principles, है ना, 5 principles. तो actually इस book के अंदर 5 astronomical systems के बारे में है. The book is about 5 astronomical systems. इन 5 systems में से one system that has been discussed in this book was taken from Romans. एक प्रिंसिपल रोमन्स का भी है, उस प्रिंसिपल को बोलते हैं रोमाका सिद्धांत. ठीक है, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ लाइक रोमन एम्पायर, द एस्ट्रोनॉमिकल प्रिंसिपल ऑफ रोमन एम्पायर. वो भी यूज किया है वराह मिहिर ने इन दिस बुक. ये सिंधुजा, reconnecting or we want to ask something? Network issues. Okay. Kanchi called as. Yes, Janvi? Yeah, taken from Romans what? एक 5 principles है ना. In this book there are 5 principles. Of these 5 principles, one principle has been taken from Roman Empire or Roman learning. उस टाइम पे जो रोम में पॉपुलर था, और उस सिद्धांत को बोलते हैं रोमाका सिद्धांत. ठीक है, तो ये बताया था वराहमिहिर ने, ना कि आर्यभट्ट ने. ठीक है, वराहमिहिर will be the answer, not आर्यभट्ट. जैसी ऑप्शंस आएगा ना तो 99% ऑफ यू विल मार्क आर्यभट्ट. सो वराहमिहिर आंसर होगा. ठीक है, one person was doctor also. सारे के सारे इंजीनियर्स ही कोई होंगे, so one will be doctor also, medical expert. There was one medical expert. आर्यभट्ट, सिंधुजा मैंने बोला आर्यभट्ट, आर्यभट्ट not आर्यभट्ट. Okay, so one person was medical expert also, and his name was Vagbhat. Vagbhat was medical expert. वाघभट्ट अगर मेडिकल एक्सपर्ट है तो कैसे माने ही इज एन एक्सपर्ट? क्या करना पड़ेगा पहले वाघभट्ट को? वाघभट्ट नीड टू राइट अ बुक. एक बुक लिखनी पड़ेगी. नीट क्लियर. ये सही था अभिनय. That was nice. So Vagbhat need to write a book, and he wrote a book, and the name of the book was Ashtanga Sangrah. Ashtang Sangrah. Ashtang Sangrah. इसका मतलब है summary of 8 branches of medicine. Summary of 8 branches of medicine. अष्टांग संग्रह. ओके, यहां तक सबको क्लियर है? एवरीवन क्लियर? अभी बुक्स खत्म, बस इतनी बुक्स थी, है ना. बस और तो नहीं चाहिए ना बुक्स, इतनी बहुत है ना. मेरे ख्याल से इतनी अगर याद कर लिया तो बहुत है ना. अब नहीं बहुत है, बस इससे ज्यादा नहीं झेल सकते अब. ओके, सो आफ्टर बुक्स थोड़ा सा आर्किटेक्चर भी हो जाए, है ना. थोड़ा सा आर्किटेक्चर भी हो जाए. तो वैसे तो आई विल बी लाइक इंडिया के अंदर ना, ड्यूरिंग द लाइक एंशिएंट एंड द ट्रांजिशन जो फेज आएगा, एंशिएंट टू मेडिवल, during these two phases, like the art in India, it was divided. Architecture was divided. The architecture which was present in the north, it was called as Nagara architecture, Nagara. And in the south it was Dravida or Dravidian. Because of the intermixing of both these, एक और culture, एक और architecture का form आया, that was called as Vesara art. Today I'm not going to tell you the detailed nitty-gritties of all these 3 arts. आज नहीं बता रहा हूँ, बस आज मैं आपको कुछ temples बता रहा हूँ. I'll be telling you some temples which were constructed, which were built during the Gupta period. Okay, Gupta period में जो कुछ important temples बने थे, and during this time only both of these दो art कौन सी? Nagar and Dravidian. During this period both these art were evolved.
दोनों आर्ट इसी पीरियड में इवॉल्व हुई थी, नगर आर्ट एंड द्रविडियन आर्ट। ठीक है, सो जब ये दोनों आर्ट करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या, दोनों के अंदर डिफरेंसेस हैं। बट टुडे we'll be looking just the temples। आज हम टेम्पल्स के बारे में बात करेंगे। तो now what happened, many temples were constructed during the Guptas, but problem is due to foreign invasions लोगों को हमारी आर्किटेक्चर इतना पसंद आया है ना, they could not resist, इतना ज्यादा पसंद आ गया ना आर्किटेक्चर, उसको तोड़ दिया। Are you getting this point? So architecture, mostly the architecture of Guptas is lost. Still we have some specimens. कुछ specimens हैं. I'll check how many pictures I have. Give me 2 seconds. Okay, can you see this temple? Devgarh temple. Can you see Devgarh temple? You know this temple is remnant from Gupta times. Where is this temple, by the way? अभी टेम्पल है कहाँ? खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, नाम सुना है? रानी की झांसी और झांसी की रानी। So this is झांसी, this is in झांसी। ये टेम्पल कहाँ पर है? झांसी में ये टेम्पल है। Like this is also called as Dashavtar temple. Dashavtar temple. It was dedicated. Dashavtar temple dedicated to Vishnu. It was dedicated to Vishnu, and there are images of other gods as well. Also, there is a panel on which Pandavas are made. एक पैनल के ऊपर पांडवास भी बनाए गए हैं। Okay, Dashavtar temple. Locally, it is called as Sagar Mad. सागर मठ भी बोलते हैं locally इसको, Dashavtar temple. Remember please, Dashavtar temple. There is one more temple. देखता हूँ ये है क्या? Could you repeat what was the last name? Sagar? Sagar Mad, M-A-R-H. Second is Gadhwas temple. Put S here. So this Gadhwas temple. This temple is situated Sagar Mad, Janvi, Sindhuja, Sabna, M-A-R-H. Gadhwas temple is situated in Allahabad. Oh, sorry. Now it should be called as प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज। तो ये गलती मैं कर सकता हूँ, आप नहीं। यू कैन नॉट अफोर्ड दिस। ठीक है, सो आप प्रयागराज लिखना, इट विल गिव बेटर इंप्रेशन, यू आर बेटर अवेयर। ठीक है, सो प्रयागराज। नेक्स्ट टेम्पल, इसके रूइंस बचे थे एंड द रूइंस वर फोर्टिफाइड इन 18th century। इसकी खास बात क्या है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस टेम्पल इज लाइक देयर इज अ फिगर दैट रिप्रेजेंट्स 10 अवतार्स ऑफ लॉर्ड विष्णु। 10 अवतार्स ऑफ लॉर्ड विष्णु। ठीक है, तो 10 अवतार विष्णु के इसमें बनाए गए हैं गढ़वास टेम्पल में। ठीक है, थर्ड इज the standing Buddha. Sir, Yes, Sabna? So in Deoghar temple, it is known as Dashavtar temple. So shouldn't this temple known as Dashavtar temple, right? Because here only there's 10 avatars is made. बोल तो सही रहे हो आप। You need to give me, मुझे अब सोचना पड़ेगा, थोड़ा चेक करना पड़ेगा। I need to just refer my notes and then come back to you on this. And Sabna, what you can do is please mail me this. I'll check it. हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हो। मुझे लग रहा है कि मैंने थोड़ा सा गलत उल्टा बता दिया। देवगढ़ की जगह should be गढ़वास टेम्पल, but still एक बार मैं चेक कर लूंगा before telling you this thing. Okay, Sabna? I guess there is no issues. So standing Buddha
Standing Buddha, the statue of standing Buddha we have found where? From Mathura. The statue has been found at Mathura. It is made up of red sandstone. Made up of red sandstone. ये रेड सैंडस्टोन से स्टैंडिंग बुद्धा की हमें स्टैचू मिली है. स्टैचू का टाइम पीरियड लगभग 5 सेंचुरी एडी का, एंड बुद्धा इज स्टैंडिंग इन अभय मुद्रा. You remember mudras? I hope you all remember the mudras. So Buddha is standing in Abhay Mudra. Okay. Apart from this Mathura statue, we have also found Buddha statue from Sarnath. हमें एक स्टैचू सारनाथ से भी मिली है. बुद्धा की स्टैचू एक सारनाथ से भी मिली है. ठीक है. एक कानपुर में टेम्पल भी मिला है. I'll see if I am, yes, brick temple of Bhitargaon. Brick temple of Bhitargaon. This temple is in Kanpur. This is renovated. ठीक है. ऐसा नहीं था, ये renovated है. This is renovated. Renovation किया गया है. तो brick temple at Bhitargaon. और एक ये मिला हमें. Other one piece of architecture was Nalanda University. Nalanda University को मैं आपको बताऊंगा, डिटेल उसकी बताऊंगा when we are doing Harsha. ठीक है. What is this? Sultanganj Buddha. Sinduja, where? कौन सा where? Bhitargaon. This Bhitargaon, it is in Kanpur. कानपुर में. ठीक है. It is made up of bricks. It is made up of bricks. It is made up of bricks. Except this temple, the temples that we have found were made up of stone. This is the temple made up of bricks. याद रखना, तभी देखो मैंने लिखा हुआ है brick, specially brick. Okay, so this temple was made up of bricks. अच्छा, एक चीज और बताना भूल गया मैं. When we were doing literature, the place of Gupta period, you can add there. The place of Gupta period are all comedies. And not tragedies. Tragedy नहीं है. ठीक है. अच्छा, बॉलीवुड मूवी की तरह एक बहुत बढ़िया एंड होगा. बॉलीवुड मूवी की तरह एक बढ़िया एंड होगा. ठीक है. सो दे आर कॉमेडीज, नॉट ट्रेजेडीज. फर्स्ट थिंग. सेकंड, एक और ऐड कर लेना आप बात. इन द प्लेस, जो प्लेस हैं, ड्रामाज हैं, द हायर कास्ट एंड द लोअर कास्ट, the higher caste, higher varnas, and the lower varnas, lower varna plus women, they speak different languages. Higher varna, they speak Sanskrit, and lower varna and women speak Prakrit. So please add there. ठीक है, मैं भूल गया बताना आपको, तो इसको ऐड कर लेना. तो अब एक चीज देखो, वेरी ब्यूटीफुल gigantic copper statue of Buddha. It was found at Sultanganj. ये मिला सुल्तानगंज, भागलपुर. ठीक है. भागलपुर सुल्तानगंज में मिला था ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवेज. जब रेलवेज का कंस्ट्रक्शन चल रहा था उस टाइम पर ये मिला. दिस स्टैच्यू सबना सुपर बुद्धा. So this statue of Super Buddha, it is 7.5 feet. इतनी height है. This is the height, 7.5 feet. है ना? Generally we are not having this much height. है ना? Maximum 6 feet last है बस. बाकी most of the people, मैं boys की बात कर रहा हूँ, 5.5 से 6 में तो 99% population समा जाएगी. है ना? तो 99% पॉपुलेशन की यही हाइट होती है, बिटवीन 5.5 to 6 feet. क्यों? यही सही बात है ना? अभिनय एंड मृगांक. So I can ask this thing from 2 boys in the class. Janvi from Sultanganj. Sultanganj is a place in Bhagalpur, present day Bihar. इस बुद्धा स्टैच्यू का वेट पता है कितना है? The weight was 1 ton. 1 ton. Okay, 1 ton का वेट था इसका. एंड अभी कहां पर है ये? Where is this statue at present? Do you know ये कहां पर है अभी? कहां गए हमारे बुद्धा?
made up of copper. It is called a gigantic copper statue of Buddha. तुम्हारे लाइक बुद्धा का मन कर रहा था कि बहुत दिन हो गए हैं इंडिया में बैठे बैठे, चलो घूम के आते हैं, है ना, घूम के आते हैं। तो कहाँ घूमने के लिए बोला इन्होंने? बोला मुझे एक जगह बड़ी पसंद है, द प्लेस इज बर्मिंघम, आई लाइक बर्मिंघम। तो ही रीच्ड बर्मिंघम। व्हेन ही रीच्ड बर्मिंघम द अथॉरिटी सेड, बुद्धा साहब आप इतने बढ़िया आदमी हो, आप हम बताओ क्या चाहिए, आप यहीं रहो हमारे पास। तो बुद्धा ने बोला ठीक है, ऐसी बात है तो ये लीजिए, आई विल बी हियर। सो ब्रिटिश टुक दिस स्टैच्यू, अच्छी चीज कुछ नहीं छोड़ी इन्होंने हमारे पास, है ना, देखा कि ये तो बहुत बढ़िया है, बड़े काम की चीज है। सो दे टुक इट बर्मिंघम म्यूजियम, इसको कर दिया लाइक शिपिंग कर दी इसकी बर्मिंघम म्यूजियम में। सो बेसिकली what this statue is showing, this statue is showing that metallurgy का progress हुआ था, है ना, art of metallurgy had progressed, art of metallurgy had progressed. They were the efficient craftsmen, there were efficient craftsmen who were perfect in casting metal statues, इससे पहले हमने मौर्यास के टाइम पर देखा था, उस टाइम भी कितनी शानदार चीजें थी। एंड नाउ सुल्तानगंज बुद्धा। सो कैन यू सी our artists, our artisans, the level of our artisans, ancient India के artisans के बारे में सोचो आप, no machines, everything by hand, है ना। सो आप सोच सकते हो मतलब क्या शानदार थी। तो ये जो स्टैच्यू है, दिस स्टैच्यू स्पेशली सुल्तानगंज बुद्धा, दिस स्टैच्यू लाइक एंड टू मच पेशेंस आल्सो, सब ना पेशेंस। ये किस लिए बोलो? क्योंकि बहुत टाइम लगेगा बनाने में, फॉर दिस थिंग दे विल बी टेकिंग अ लाइक लॉन्ग टाइम टू मेक। ओके बिल्कुल सही बात है, they were so patient. We need to learn like this thing, है ना। So patience is a very nice quality. Patience, being patient is a very nice quality. हम में से 90% of us are not patient. Do you know this thing? They are impatient people. खराब टाइम आएगा तो हमें लगता है जल्दी से खराब टाइम निकल जाए। We are not impatient. We are impatient. Okay. एक और चीज थी लास्ट में, एक और चीज बची, सही है। क्या है सही? चैत्रा कौन सही है? यस चैत्रा, impatient, सही है impatient. So you are like saying we must be impatient, we must not be patient, that's the thing. अच्छा okay, मुझे तो यही लगा था। एक चीज और बच गई। during the period of Guptas, let me check if I have that also. Okay, no, I don't have 19. Okay, during the period of Guptas कुछ पेंटिंग्स भी होंगी। पेंटिंग्स तो मैं पेंटिंग्स को डिटेल में अभी नहीं जा रहा हूँ, पेंटिंग्स में जब आर्ट क्लासेस में बता दूंगा पेंटिंग, बट एटलीस्ट आई एम टेलिंग which were the paintings, important paintings. तो पेंटिंग्स during the time of Gupta period, number 1, Bagh caves, paintings at Bagh caves. Bagh caves are present in Gwalior. मेरे पास अभी पिक्स नहीं है। तो Bagh caves ग्वालियर, एंड ग्वालियर में लाइक यू कैन से विंध्यन माउंटेन्स में बनाई हुई है। विंध्यास नाम सुना है? विंध्यास, सतपुरास, अरावलीस। रिमेंबर आई हैव टोल्ड यू लाइक दिस इज द वाटरशेड ऑफ इंडिया। तो दिस थिंग यहाँ पर जो मैंने बनाया था, याद है ये चीज, है ना। तो विंध्यास एंड सतपुरास। ओके, सो बाघ केव्स number 1, and number 2 Ajanta paintings. But Ajanta paintings के बारे में like these were the paintings जिनमें like the paintings started from the period of 1st century BC to 7th century AD. तो गुप्ता से पहले ही शुरू हो गई थी अजंता पेंटिंग्स, है ना। But most of the paintings relate to Gupta times. These paintings, the paintings in Ajanta caves कहाँ पर है Ajanta caves? Where are Ajanta caves?
आपको पता होगा अजंता, तो वेरी सिंपल, अजंता केव्स औरंगाबाद महाराष्ट्र, और एलोरा केव्स कहां पर है? वेयर आर एलोरा केव्स? वेयर आर एलोरा केव्स? सेम, एक साथ, दोनों आमने सामने। यस, सेम। जानवी, दोनों आमने सामने है क्या? ये साइड साइड में आमने सामने, समथिंग लाइक दैट। नियर बाई ओनली, मे बी, यस, नो दैट। इतना भी पास नहीं है, दो बोथ आर लाइक ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं बिल्कुल पास पास, देयर इज अ डिस्टेंस बिटवीन देम, नाइस डिस्टेंस दोनों के बीच में। Okay, so Ajanta paintings, like mostly these paintings relate to Gupta period, and they depicts events in the life of Buddha. In the life of Buddha, generally the stories from Jatak tales, उनकी pictures बनाई हुई है Ajanta paintings में. But if someone asks, these paintings, like Guptas are the patron of these paintings, can we say yes? We don't have any evidence. We don't have any evidence that Guptas were the patrons of Ajanta paintings. If Guptas were the patrons of Ajanta paintings, तो most of the paintings बुद्धा की नहीं होती. Getting this point? So Guptas were not the patrons of these paintings. दूसरे लोग थे, सतवानास, इश्कवकूस, वकटकास, है ना, वो सब लोग patrons थे, but not Guptas. We don't have any evidence basically. हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है ना, एविडेंस नहीं है, बट हम बस एक चीज बोल सकते हैं, दिस इज द फाइनेस्ट स्पेसिमेन, दिस इज द फाइनेस्ट स्पेसिमेन ऑफ बुद्धिस्ट आर्ट. बुद्धिस्ट आर्ट का ये फाइनेस्ट स्पेसिमेन था. ओके, बुद्धिस्ट आर्ट का ये फाइनेस्ट स्पेसिमेन था. द लास्ट थिंग जो मैं कल आपको बताना भूल गया, दैट वाज द नवरत्नास. कहाँ गए नवरत्नास? Where the slide has gone? Sir, wonder. Yes, Samna. It was said that from 1st century BC to 7th century AD, the paintings were done in Ajanta caves. It is cave, right? It was cave. So people were living there, or people were going there just to paint, so that Just the to painting paint. doesn't. ना, just to paint. वहाँ पे रहते तो खराब हो जाती सारी की सारी. फिर रहेंगे तो फिर कैसे? फिर अपनी पेंटिंग्स भी तो बनाएंगे. Okay, so the paintings were done so that it doesn't diminish, or to protect the cave paintings were done. देखो सबना, I'll ask you one thing. When you are bored enough, जब आप लोग क्या करते हो? Just to entertain yourself. क्या करते हो आप सबना? Yes, sir. Drawing. समझ रहे हो? है ना, there are so many things. हम मूवी देख सकते हैं, वेब सीरीज देख सकते हैं, हम तो कितनी सारी चीज कर सकते हैं. But people at that time, what they, है ना, समझ रहे हो? अभी आप समझ रहे हो ये चीज? I hope अभी आपको आंसर मिल गया होगा आपका. No, sir. My question is that they were doing on caves. Why? Only they were doing on caves. Inside the caves or outside the caves? Yes, inside the caves. Inside the caves. अभी तो पूरी लाइटिंग वगैरह लगा रखी है हमें देखने के लिए. Okay. Okay. Yes. Okay, सबना. Okay, एक चीज मैं और भूल गया. एक चीज और भूल गया बताना. That was like the names of the Navratnas. The names of Navratnas of C2. C2 was having Navratnas. है ना? C2 के आपको याद है? C2 was having Navratnas. तो नवरत्न कौन कौन थे उनकी कोर्ट में? Just you need to have the names of some people. Navratnas were number 1, Kalidasa, the most important. Number 2, Hari Sen. Number 3, Amar Simha. Number 4, Dhanvantri. Number 5, Varaha Mihir. Number 6, Vara Ruchi. Number 7, Sanku.
शंकु. Number 8, वेल भट्ट, वेला भट्ट. Number 9, काहा पनाका, काहा पनाका. So question कैसे आ सकता है? How can the question be asked from the नवरत्नास? हाँ जी, क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं? यस, कोई बता सकता है मुझे? एनीवन, सोच के बताओ. Could you repeat the names, fields? Okay. Could, हाँ सिंधुजा, I can. So कैसे क्वेश्चन हो सकता है? जानवी, give me a minute please. I'm just telling. Give me just 1 minute. Who out of the following were not part of Navratnas? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड. बिल्कुल एकदम ऐसे क्वेश्चन आएगा. इनके फील्ड भी पूछे जा सकते हैं. जो क्वेश्चन जानवी पूछ रही है वो ही पूछे जा सकता है. सो कालिदासा, you know the field of Kalidasa? Yes, the field of Kalidasa. Everyone is aware of the field of Kalidas. Harisen was a poet. He was a poet, Harisen. Amar Simha, इसका? Yes, अमर सीमा का पता है? अमर सीमा ने क्या लिखा था? अमर कोश, लेक्सिकॉन. धनवंतरी ने क्या लिखा? धनवंतरी इज फेमस फॉर धनवंतरी. धनवंतरी किस लिए फेमस था? धनवंतरी का नाम सुना होगा आपने, आई गेस. यस जानवी, यस जानवी बताओ. अच्छा, रिकनेक्टिंग. ओके, तो धनवंतरी का कभी नाम सुना है? मेडिसिन, बिल्कुल सही है, एकदम सही है. मेडिसिन, रिलेटेड टू मेडिसिन. और वराहमिहिर, ऑलरेडी यू नो, वराहमिहिर वाज द अथॉरिटी ऑफ एस्ट्रोलॉजी. वरारुचि वाज अ ग्रामरियन. Shanku was architect, chief architect. Shanku, chief architect. Vela Bhatt was a magician. ठीक है. And Kaha Panaka, he was also astrologer. तो ये आपको दो चीजें याद करनी पड़ेंगी. Who were the 9 gems? And what were their fields? जानवी, अभी सबके फील्ड्स हैं आपके पास में, है जानवी? So please remember the fields and these things. Okay, so this was all about Guptas. Now we'll proceed to one of the feudatories of Guptas, and they are called as Vardhans or Pushyabhutis. Vardhans और पुष्यभूति एक ही बात है, दोनों एक ही बात है. Sometimes they are called as Vardhan dynasty or sometimes they are called as पुष्यभूति डायनेस्टी. पुष्यभूति से डरना मत, है ना, इस वर्ड से डरना मत. पुष्यभूति सिंपल से वर्ड है. तो व्हाट हैपेंड नाउ, वापस से चलते हैं गुप्ताज में. व्हाट हैपेंड, द गुप्ता पीरियड, द गुप्ता एम्पायर, गुप्ताज, they declined. We know why they declined. But when they declined, there were many feudatories. है ना, बहुत सारे feudatories थे. अब जब गुप्ताज डिक्लाइन हो रहे थे, when Guptas were declining, what happened in North India, especially in North India? In North, what was happening? There was political disorder. And disunity. ये तो हमेशा ही देखने को मिली. ये हमारी सबसे एक वीकनेस रही है. In ancient or in medieval, if you can learn anything from history, it is the disunity. सही बात है, गलत बात है? From ancient or medieval, if you need to learn one important thing, one learning that you can have, that is like हमें क्या सीखना चाहिए? We must be united. है ना? यही है ना, मेरे हिसाब से तो यही है. ये सिखाता है हमें. हम यूनाइट कभी नहीं है, आपस में लाइक सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं. और व्हाट इज द रिजल्ट? द रिजल्ट इज नाउ द स्टेट्स आर फाइटिंग लाइक एनीथिंग.
The states are fighting like two countries in India. You must be knowing that. Northeast में क्या हो रहा है? The states are fighting like two different countries. है ना? Aware? You're aware? Oh, and in addition to it, what is happening in Delhi? What is happening in Delhi? That too, एक हिंदी में sentence होता है नाक के नीचे. When Parliament is in session, Parliament की नाक के नीचे कुछ लोग आके they are using such a language for one sect. ये पता है आपको? You must be aware of this as well. What is happening? Like Hinduism के नाम के ऊपर to save Hinduism, those people don't know कि वो Hinduism को बदनाम कर रहे हैं, है ना? They don't know that. नहीं पता उनको. Like, what is the teaching of Hinduism? ये भी नहीं पता होगा. The people, and I can say this, so many people wearing that saffron-clad clothes don't even know what is Hinduism. How Hinduism has evolved over the period of time. What are the teachings of Hinduism? नहीं पता. But just for cheap gains, and we Indians we are a population, we are a country of illiterate people. Okay, uneducated people. Illiterate आपको कुछ बुरा लग सकता है, but uneducated people. हम उनकी बातों में आ जाते हैं. Sometimes even very nice educated people are also in their support. Do you know when like police have arrested those people, there are so many people for their support, they are on that dharna there. Do you know this thing? When police have arrested those people, there are so many people for their support who are sitting at dharna. Even the educated act as, yes, Chaitra, बिल्कुल सही बात है. Most of the times even the educated, they are acting as uneducated. मुझे तरस आता है उन लोगों के ऊपर जो उन ऐसे लोगों के लिए, उन्हें बचाने के लिए धरने पे बैठे. Seriously, I feel pity for them. I feel pity for their children. उनके बच्चों के ऊपर बड़ा पिटी आता है मुझे, है ना? तरस आता है, बहुत तरस आता है. क्या कर सकते हैं? Okay, कोई बात नहीं, अभी हम क्लास में ले लेते हैं. So Guptas declined so many feudatories. There was political disunity and disorder in the North India. So many feudatories, इन्होंने बोल दिया, they claimed independence. इन्होंने बोल दिया we are independent now. रोक सको तो रोक लो, है ना? रोक सको तो रोक लो. And as इसी सीरीज में Vardhans was like one dynasty which rose to prominence under one man. His name is Harshavardhan. Most of the time आप सुनेंगे the like Harshavardhan as last great Hindu ruler of India. Last great Hindu ruler of India. The fact is, neither he was a patron of Hinduism nor he was a ruler of India. Okay, जब भी कोई आपके सामने बोले ऐसे, Harshvardhan was the last great ruler of India, but the fact is he was neither a patron of Hinduism nor he was the ruler of India. Are you getting what I'm trying to say? समझ रहे हो? समझ आ रहा है मैं क्या बताना चाहता हूँ? अभिनय, चैत्रा, सिंधुजा, दामिनी, जानवी, कांची, मृगांक, सपना एंड शुभ्रा. Yes? Are you getting or not? Tell me. क्या बोला मैंने? बताओ इसका मतलब क्या है? सपना, please tell me what I mean. Yes, Sapna, please unmute. Yes, sir. Yes, Sapna. So what do you feel? What I'm trying to tell? मैं क्या बताना चाहता हूँ? He didn't have that much empire territory, like Guptas and all. The Vardhans had never had that much territory. Yes, he was not the ruler of whole India. वो तो एक पार्ट का रूलर था ना. He was not the ruler of India. There was just a part. I'll show you one map. Right. Give me a minute, please.
Okay, before moving ahead, I have found something for you. इसी स्लाइड में मुझे कुछ मिला है, मैं दिखाता हूं आपको. You need to give me a minute, but okay. Can you see this? Statue of Gupta period, Sarnath statue of Buddha. अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था एक स्टैच्यू सारनाथ में भी मिला था. So this is the statue of Buddha. मुझे लगा था स्लाइड कहाँ गायब हो गई, तो थी यहीं पे, वो थोड़ा रीशफल हो गया. Okay, so this is that Sarnath statue of Buddha. This is the statue of Vishnu present in Devgarh Temple, Jhansi. Statue of Vishnu, Devgarh Temple, Jhansi. Okay. Then this is the statue of Varaha Avatar, Udaygiri. Varaha Avatar, Udaygiri. If you can see so many things which have been like made here. पूरा देखो कितना सारा कुछ बना हुआ है. Varaha Avatar like Vishnu का ही अवतार. Then statue of Vishnu that we have found from Mathura. एक और है statue of Ganga and Yamuna. Statue of Ganga and Yamuna, ये भी हमें मिला. इतनी सारी statues थी. You can like you can use these things in the statues. एक statues बना के उसके अंदर ये लिख लेना. Statues of Ganga and Yamuna, statues of Vishnu Mathura से, statues of Varaha Avatar Udaygiri, statues of Vishnu Devgarh Temple Jhansi, statue of Buddha from Sarnath. और एक तो मैंने आपको वहां पर दिखाई है अभी, क्या नाम था उसका, मथुरा. ठीक है, मथुरा. ओके, तो वापस आते हैं हर्षा के ऊपर. आई वाज गोइंग टू शो यू वन मैप. 25. See, can you see this? This was the empire of Harsha. Now this is the empire of Harsha. So can Harsha be called as a ruler of India? Now you tell me. This was the empire of Harsha. Yes, Sindhuja. Sindhuja, what happened today? So many network issues. क्या हो गया आज, Sindhuja? Professor, I'm actually in the airport traveling. That's why. Okay, where you are going? I'm coming back from Madurai to Bangalore. Madurai to Bangalore. Okay. Yeah. So how's the weather? Pretty hot in Madurai, pretty cold in Bangalore. Pretty cold in Bangalore. Okay, because like landing at Bangalore has always been very nice for me. Bangalore and Mumbai, the route between Bangalore and Mumbai, like every time, oh my god, like this route, ये मैं कभी नहीं भूल सकता ये रूट, मुंबई एंड बैंगलोर, है ना. ये रूट हमेशा से ऐसा है ना, लाइक स्पेशली ड्यूरिंग द मॉनसून्स, जस्ट एनीवन, अगर कोई बहुत डेयरिंग है तो प्लीज ट्रैवल टू दिस रूट. इस रूट के ऊपर ट्रैवल करना, मजा आ जाएगा आपको, है ना. ओके ओके सिंधुजा, वेरी हैप्पी जर्नी टू यू एंड होप कि आपकी फ्लाइट थोड़ा सा आराम से शेकी ना हो. Okay, so this was the empire of Harsha, and after Guptas, these were Pushyabhutis, these were the Maukharis, and ये बचे थे लास्ट में गुप्ता, जो लास्ट में थोड़े से गुप्ता बचे थे, ये वो लास्ट में गुप्तास बचे थे. These were the Matrikas. Here यहाँ पर आ चुके हैं Chalukyas. This area was with Chalukyas. Here were Pallavas, and this was the territory of Pandyas. All were contemporaries. अब क्या होगा? This dynasty, Pushyabhuti, this will enlarge, something like this, and this area will come under one ruler, that was Harsha. Okay, so what happened? Okay, before what happened, what are the sources for this dynasty? Source number one, Harshcharita. एक बुक है हर्षचरिता. It was written by Ban Bhatt.
by Ban Bhatt. Ban Bhatt was the court poet of Harshavardhan. He was the court poet of Harshavardhan. Okay, you have just landed. Okay, Sindhuja. Okay, great. So Harshacharita was Ban Bhatt was the court poet of Harshavardhan. This is source number 1. Source number 2, like Fayan in Gupta's, one traveler will be coming during the Vardhans, and the name is Huain Sang. Huain Sang. जानवी, आपको पता था क्या मैं बस बोलने वाला हूँ? मतलब मैंने बोल के कंप्लीट भी नहीं किया था, उससे पहले आपने टाइप कर नहीं वो तो ठीक है, लाइक यू न्यू कि मैं भी पूछने वाला हूँ. इतना स्पॉन्टेनियस, इतनी स्पीड. So you are having a very nice speed of chatting, so I can infer that आप WhatsApp and all कुछ ज़्यादा use करते हो. जानवी, so this is the inference that I can make. इतनी speed. Okay, so Huain Sang, he was a Chinese traveler and visited India in the 7th century AD. 7th century AD. Number 3, Harsha was a writer himself. Harshavardhan, he was a writer himself. He wrote some dramas. कुछ dramas लिखे. एक था रत्नावली. Second was Nagananda. And the third was Priyadarshika. Ratnavali, Nagananda, and Priyadarshika. So these were the 3 dramas that were written by Harsha himself. So यहाँ से भी हमें information मिलने वाली है ना. Also, number 4, we are having some inscriptions. कुछ inscriptions भी हैं. Like 2 तो हमारे पास plate inscription है. प्लेट इंस्क्रिप्शन, कॉपर प्लेट के ऊपर कुछ लिखा हुआ हमें मिला है. मधुबन एंड सोनीपत इन हरियाणा. एंड नंबर 2, देयर इज वन इंस्क्रिप्शन कॉल्ड एज बांसखेड़ा इंस्क्रिप्शन. ये इंस्क्रिप्शन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस इंस्क्रिप्शन कैरीज सिग्नेचर ऑफ हर्षवर्धन. This inscription carries signature of Harshavardhan. Do you want to see the signature of Harshavardhan? Then I'll show you. Jami, Madhuban and Sonipat. So this is the signature of Harshavardhan. ये लिखा हुआ क्या है? स्वेहस्तो मम महाराजाधिराज श्री हर्षस्य. स्वेहस्तो मम महाराजाधिराज श्री हर्षस्य. ओके, इसका मतलब क्या है? बाय माय ओन हैंड लॉर्ड ऑफ किंग्स श्री हर्षा. ओके, ठीक है. ये हर्षा का सिग्नेचर कहां से मिला हमें? फ्रॉम वेयर वी हैव फाउंड दिस? दिस इज बांसखेड़ा इंस्क्रिप्शन. ठीक है. सो ये तो हो गए सारे के सारे हमारे सोर्सेस. ऑल दीज आर दीज सोर्सेस. थोड़ा सा देखते हैं फाउंडर के बारे में, है ना. फाउंडर के बारे में भी देख लेते हैं. हाउ मच टाइम ही वुड हैव टेकन टू डू दैट? चैत्रा, लिखने के लिए अरे इतना टाइम होता था पहले. they were having luxury. आज मुझे बस मम लिखना है ना. आज मुझे बस मम लिखना है. and mum in North India is a word used by kids for water. देखो जानवी को पता है, जानवी is from North India. So mum is a universal word in North India, है ना. Every child uses this word mum. Okay. So थोड़ा सा फाउंडर के बारे में देख लेते हैं. Founder was a person. He was called as Pushyabhuti. And these people, they were the feudatories of Guptas. They were feudatories of Guptas. ठीक है. Pushyabhutis are feudatories of Guptas, and they used to call themselves as Vardhans.
अपने आप को लोग ये बोलते थे वर्धांस। तो अगर डॉन मूवी देखी है, डॉन, देयर इज अ वर्धान इन डॉन आल्सो। याद है आपको? देयर इज अ वर्धान इन डॉन आल्सो। आई गेस द रोल वाज प्लेड बाय बोमन ईरानी। इफ यू हैव सीन दैट मूवी वर्धान, क्यों देखिए, नहीं देखी किसी ने भी डॉन मूवी? किसी को नहीं पसंद? मुझे बस वो इसलिए पसंद है, द पर्सन हु हैज, yes Sabna, Pushyabhuti is a person. So the person who has directed that movie, like, I admire him. I literally admire him. नाम भूल गया, फरहान अख्तर। Yes, फरहान अख्तर. Why I admire him? Like मुझे खुद हंसी आ रही जानवी. Why I admire him? Okay, on a serious note, he's a man, like, he's a director, he's an actor, he's a producer, he's a singer, he's a writer. और क्या चाहिए? All in one. He's just all in one. है ना? All in one. And everything, just see everything. Like, just see his acting. Just see his acting. जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. I guess, like, after that, Bobby Deol. After Bobby Deol, he is the best. है ना? Bobby Deol is best. है ना? उस मूवी में Bobby Deol is best. है ना? Bobby Deol की तो कहने क्या इस मूवी में? Otherwise, like, not Bobby, Abhay Deol. Sorry, Abhay Deol. Sorry, Abhay Deol. So उसके बाद like क्या बढ़िया एक्टिंग कर रखी है, and like very nice director also. Such a fantastic singer, and also writer. So complete man. So that is the reason why I admire him, and one of my favorites in Bollywood. बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग, वेरी हार्ड वर्किंग फेलो। आप भाग मिल्खा भाग देख लो आप, and you will get to know how much like hard work he has done in that for one movie. Okay, so these people who were the feudatories of Guptas, they called themselves as Vardhans. And after the invasion of Huns, जब Huns ने invade किया, like उस टाइम के ऊपर they assumed independence. इनको लगा कि गुप्ता से कुछ होने वाला नहीं है, so now we'll declare our independence. The first important king was Prabhakar Vardhan. This was the first important king, Prabhakar Vardhan. प्रभाकर वर्धन ने अपना कैपिटल बनाया थानेसर और थानेश्वर। कहां पर है ये जगह? Where is this place? थानेश्वर और थानेसर, present day Haryana. So we don't have anyone from Haryana. Janvi, it is not Manesar, it is थानेश्वर. ये आपको मिलेगा पानीपत के आगे, क्या नाम है जगह का? कुरुक्षेत्र के पास। Yes, Janvi, it's different. थानेसर और थानेश्वर. So these people also assume the same titles that Guptas were having, है ना? उनसे उन्हीं के feudatories हैं, तो पता ही होगा उनके क्या क्या टाइटल थे, है ना? It's very simple. It's but obvious. They must be aware of the title that Guptas were using, so they use the same title. Yes, Sindhuja, it was the capital. Thanesar was the capital of these people. Later on, the capital will be changed. बाद में change हो जाएगा capital, but starting में capital थानेश्वर था. So they use the same titles like महाराजा धीराज. ये तो आपने खुद देख लिया, मम स्वहस्तो महाराजा धीराज, है ना? ये तो आपने खुद देख ही लिया अभी, महाराजा धीराज. What one was this? Yes, Sabna. In which script that signature was? Nagari? This is Nagari script. Yes, Nagari script. Okay. So महाराजा धीराज and एक और टाइटल था, please. परम भट्टारका. It was another title that was used by these people, Vardhans. After the death of Prabhakar Vardhan, अब हुआ क्या? प्रभाकर वर्धन के बाद again we are having one Bollywood story. प्रभाकर वर्धन की death के बाद he was having a son. The name of the son was Rajyavardhan. It is not Rajyavardhan Rathod. It is Rajyavardhan. Only Rajyavardhan. So Rajyavardhan, the son of Prabhakar Vardhan, he took the throne. He became the ruler, and he was having one sister. एक sister भी थी. एकदम Bollywood story है एकदम.
So he was having one sister. Sister का नाम था राज्यश्री. ना, it appears more a South Indian name, राज्यश्री, है ना? थोड़ा साउथ में ऐसे नाम होते हैं राज्यश्री टाइप्स. आई गेस एक एक्ट्रेस का नाम भी है, श्री पीछे लगा हुआ है, कोई तो मैंने देखा था एक बार, राज्यश्री. सो ही वाज हैविंग वन सिस्टर राज्यश्री. तो प्रभाकर वर्धन ने सोचा चलो सिस्टर की शादी की जाए, सिस्टर की शादी की जाए. ये भाग्यश्री. So in my office there is a girl like Bhagyashri. If she is seeing this lecture, I don't know, like, okay. So Rajyashri was the sister of Rajyavardhan. Shri Devi, देखा, and Shri Devi भी South से थी ना सब ना. Shri Devi was from South, I guess, है ना? She was from South. But her daughters, like, अभी वो सब मुंबई के हो गए हैं. जानवी नाम है ना, है ना? जानवी नाम है ना, the daughter of Shri Devi. शायद जानवी. हाँ, okay. So Rajyavardhan was having one sister, Rajyashri. Rajyavardhan ने सोचा चलो बहन की शादी करते हैं, because he wanted to dance on that song. है ना, गाना है ना, like एक गाने के ऊपर डांस करना था, तो इसलिए राजश्री की शादी कर दी. राजश्री की शादी किसके साथ करी? राजश्री was married to a Maukhari ruler. Maukharis, अभी मैप दिखाया था ना मैंने. Like here they were Pushyabhutis, here they were Maukharis. The Maukhari ruler, the name of Maukhari ruler was Grihavarman. तो गृहवर्मन के साथ में शादी कर दी राजश्री की. राजश्री weds गृहवर्मन. Now when that marriage took place, जो पास के छोटे छोटे से किंग्स थे, the kings, one, the king of Malwa, the ruler of Malwa, plus the ruler of Bengal. The ruler of Malwa was, इसका नाम था Devagupta. And the ruler of Bengal was Shashank. क्या बात है मृगांक? शशांक एंड मृगांक दोनों राइम कर रहे हैं. शशांक. So the ruler of Bengal, Shashank and Devagupta, दोनों के दोनों ने मिलके what they did, they killed Grihavarman. What Rajyavardhan will do? Rajyavardhan, he is having one sister. Sister की शादी हो गई Grihavarman के साथ में. Grihavarman was killed by Shashank and Devagupta. What Rajyavardhan will do? Rajyavardhan के सामने भी Rajyavardhan क्या दिख रहा है? बदला, है ना? बदला दिख रहा होगा ना राज्यवर्धन को, तभी तो बॉलीवुड स्टोरी बनेगी. सो नाउ राज्यवर्धन वांट्स टू टेक अवेंज. नाउ ही वांट्स टू टेक अवेंज, है ना? सो राज्यवर्धन मार्च्ड टू मालवा. राज्यवर्धन कहां पर आ गया? राज्यवर्धन केम टू मालवा, है ना, अटैक करने के लिए देवगुप्त और शशांक को. लाइक राज्यवर्धन को पता चला शशांक इज आल्सो इन मालवा. बोथ आर सिटिंग एंड एंजॉयिंग देयर, है ना? बोथ आर हैविंग a party there. तो राज्यवर्धन came to Malwa. मालवा में जब आया, here शशांक killed राज्यवर्धन. Are you getting? So the tragedy हो गई. शशांक killed राज्यवर्धन. Rajyavardhan is no more. Rajyavardhan is having a younger brother. His name is Harsha. In such circumstances, Harshavardhan came to the throne. These were the circumstances in which Harshavardhan came to the throne. So Harsha, who was a younger brother of Rajyavardhan, he was like younger brother of Rajyavardhan. तो राज्यश्री को ना इन्होंने कब्जे में कर लिया था ना. राज्यश्री को पकड़ के बांध अपने घर में रख लिया था देवगुप्त और शशांक ने. So Harsha rescued his sister and drove Shashank from this place. शशांक को यहाँ से भगाने के बाद, what he did, he made Kannauj as his capital. और अब जब कन्नौज कैपिटल बना, when this Kannauj was made the capital, so Kannauj will be like something that everyone will covet for. इसके बाद में everyone will want Kannauj, and it was Harsha
during whose time Kannauj came to spotlight. बिल्कुल सही सबना. It was during the Harsha's period when Kannauj became the most important city. जैसे अगर आपसे कोई पूछे which is the most important city of India, अगर किसी को बोले कि मैं आपको एक सिटी का महाराज बनाना चाहता हूँ, which city will choose? कौन सी सिटी चूज करोगे? Yes, Abhinay, Chaitra, Sindhuja, Janvi, Kanchi, Mrigang, Sabna, and Shubhra. Which city you will choose? One city. You need to name only one city. कौन सी city choose करोगे? Maharaj of that city. No answer. Abhinay is typing. Abhinay को मुंबई चाहिए. Abhinay मैं समझ रहा हूँ because of Bollywood. I'm getting. है ना? Bollywood में I'm getting Abhinay. समझ गया मैं. सिंधुजा दिल्ली और बैंगलोर, शुभ्रा दिल्ली, जानवी दिल्ली. वैसे अगर ये क्वेश्चन आप मुझसे पूछोगे, आई विल चूज दिल्ली बिकॉज महाराज ऑफ दिल्ली, लाइक दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. पूरा इंडिया के कैपिटल हो जाएंगे ना, है ना, पूरा इंडिया के हो जाएंगे और क्या. सो नाइस वन जानवी, शुभ्रा एंड सिंधुजा, नाइस वन. सो कन्नौज विल बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट सिटी आफ्टर दिस पीरियड. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सिटी हो जाएगी कन्नौज. नाउ हर्षा बिकम्स द किंग. हर्षा इज एक्सपैंडिंग हिज एम्पायर. व्हेन हर्षा इज एक्सपैंडिंग हिज एम्पायर, तो अभी मैंने मैप में एक जगह दिखाई थी डेक्कन में. दिस प्लेस इट वाज रूल्ड बाय चालुक्यास, है ना. दिस प्लेस वाज रूल्ड बाय चालुक्यास. यहाँ पर चालुक्यास रूल कर रहे थे. तो नाउ हर्षा ने ये जगह तो ले ली. नाउ ही वांट्स टू हैव दिस प्लेस एज वेल. He wants to have this place as well. When did they come? Sindhuja कौन? चालुक्यास. सिंधुजा अभी हर्षा हो जाने दो. सिंधुजा एक बार हर्षा हो जाने दो. You will come to know, like ये पूरी साउथ में क्या चल रहा है ना. I have left all things in south. साउथ में क्या चल रहा है? I'm not telling you right now. साउथ में यहाँ पे पल्लवास आ गए, चालुक्यास आ गए, है ना. This I am not taking. ओनली ऊपर का नॉर्थ में हम चल रहे हैं. हर्षा के बाद हमें यही आना है. दिस इज द ट्रांजिशन फेज ऑफ द साउथ. पल्लवास, चालुक्यास. ओके सिंधुजा, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम दे दो मुझे, मोहलत दे दो सिंधुजा थोड़ी सी. ओके, सो व्हेन चालुक्यास वर रूलिंग इन दिस डेक्कन, हर्षा वाज इन द नॉर्थ. हर्षा ने सोचा कि आई हैव दिस प्लेस एज वेल. मुझे तो ये जगह भी चाहिए. अब क्या करना है? अटैक करना पड़ेगा. ही नीड्स टू अटैक. तो चालुक्यास का एक रूलर था. क्या बात है मृगांक, आज तो मृगांक पूरे फॉर्म में है. पुलकेशिन टू was the ruler of Chalukyas. So Pulakeshin versus Harsha हो गया. Harsha versus Pulakeshin, and in this battle Harsha was defeated. Otherwise, if Harsha would have won in this battle, this would have been the empire of Harsha. But empire तो यही रह गया, है ना. Harsha was defeated. Harsha defeated हो गया, but Harsha was not killed. Harsha was only defeated. So this thing, how do we know this? This information, ये information हमारे पास कैसे है? We have one inscription. That inscription is called as Ahole inscription. We have one Ahole inscription. This inscription is of Pulakeshin II, and this inscription mentions the defeat of Harsha by Pulakeshin II. And after defeating Harsha, Pulakeshin II ने पता क्या टाइटल लिया? What title he took? है ना, ये क्या टाइटल लिया? That he took the title which Guptas were using, Parmeswara. आप हो गए महाराजा धीराज. I am now Parmeswara. I have defeated you, so I am Parameshwar. So Huyen Sang, जब Huyen Sang इंडिया आया, Huyen Sang also confirms the victory of Pulakeshin. So Ahole inscription है हमारे पास में for this information. Also we have accounts of Huyen Sang. हमारे पास Huyen Sang के accounts भी हैं. Huyen Sang also tells that Pulakeshin II defeated Harsha. ठीक है, Pulakeshin II defeated Harsha. Okay. अब what was the like empire, kingdom?
कौन कौन सा एरिया किंगडम में था? So the kingdom of Harsha included like two types of areas. One area directly controlled, direct control. Another area was called as sphere of influence. Sphere of influence. The people who were sending tributes to him. The people who were sending tributes to him. The area under this direct control, the area was present day parts of, it is parts of, some parts of Rajasthan, some parts of Punjab, UP, Bihar, parts of Odisha. ये मैं present day के हिसाब से बता रहा हूँ. And the sphere of influence was Kashmir, Vallabhi. याद है वल्लभी में क्या हुआ था? Second Jaina Council, 6th century AD, if you remember. Kashmir, Vallabhi, and Kamrup. कहाँ पर है Kamrup? Where is Kamrup? And Sindh. Very good, Megang. And Sindh. So this was the area under direct control, and it was the sphere of influence. This was the sphere of influence. So Harsha ने capital क्या shift कर लिया? Kannauj. Kannauj was situated on an elevated area. Elevated area. Present day Kannauj. Kannauj famous इसलिए है क्योंकि Kannauj की MP is Dimple Yadav, I guess. The wife of Akhilesh Yadav, Dimple Yadav, is from Kannauj. She has one from Kannauj. That is the seat. Yes, Janvi? Point once. Yes, Janvi? So could you just repeat this once, like whatever you did? हाँ, मैं बताता हूँ. मैंने बोला देखो दो टाइप के एरियाज थे अंडर हर्षा. One area was under direct control, another was a sphere of influence. Direct control, like बिल्कुल direct, the area that was coming directly under Harsha, like parts of Rajasthan, Punjab, UP, Bihar, Odisha. But there was some area that was not directly under Harsha. इनके अपने अपने kings होंगे, है ना? And those kings were paying tribute to Harsha. इनके kings Harsha को tributes pay कर रहे थे. इन्होंने Harsha को overlord मान लिया था. So that was called as a sphere of influence. Sphere of influence. Okay, Janvi? Janvi, ठीक है? Okay, so we'll meet tomorrow again and we'll complete. Sir. Yes, Sabna. I have one doubt in Sangamej. In that slide, it was written that Madurai is the capital of Pandyas, and in another slide, it was Kapadapuram is capital of Pandyas. It was Madurai. Okay. Madurai. ठीक है? Okay, bye bye. Thank you. Janvi, PN is Punjab, RJSN is Rajasthan. Punjab and Rajasthan. Okay, bye bye. Thank you. Okay. Oh, okay. Yes. Tomorrow I have cancelled the classes. I have some urgent work. I need to take my mom to the hospital actually. So I have taken a leave tomorrow. So we'll meet day after tomorrow. Okay. So thanks, Sindhuja. Bye bye. Have a great day.